जैसे एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है फ्री एंड पे, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? Sir, in that case, it will be a paradox. Draw a simply supported beam subjected to a couple anywhere between the ends. Draw it. Sir, triangle. Show me. What will it be? So according to your bending moment diagram, if I draw the Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। good afternoon. Okay, so who is the candidate? ध्यान राज सर ज्वाइन किया, वीडियो ऑन कर लेना ध्यान राज। Yes, sir. Dhyan Raj. Okay, so first of all, Dhyan Raj, a very warm welcome to you. Yes, sir. Thank you. Good afternoon, sir. All of Good afternoon. So Dhyan Raj, first of all, introduce yourself to the panel. Sir, my name is Nandra Janal Chaudhary. I belongs to 𝐂𝐚𝐭𝐡 district, Maharashtra. I did my graduation from Vishwakarma Institute of Information Technology, Pune. Currently, I am working in a private sector company as a graduate engineer training. And in recent GATE examination, I have secured All India rank 224. Okay. Dhyan Raj, you graduated in the year 2000? 2023. Okay. Yes, sir. So what are your favorite subjects? Sir, strength of material, basic thermodynamics, heat transfer, and fluid mechanics. Okay. Any more subjects? Mathematics? So Ramanand sir, would you like to start? यस सर। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो स्टार्ट उसी से करते हैं। आप एक पेन और पेपर रखे हो क्या साथ में, अगर कुछ एक्सप्लेन करना हो तो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जैसे एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है फ्री एंड पे, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? Sir, triangle. ट्रायंगल। और फिर उसमें साथ में पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। It's better if you draw and show. ड्रॉ। Sir, in that case, it will be a paradox. ओके, अब इसमें वेरी गुड, शुरू के हाफ पोर्शन में फिक्स एंड से बीच मिड पॉइंट तक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 है, फिक्स पे मैक्सिमम है, और अदर हाफ पोर्शन में अगेन यूवीएल लग रहा है बट उसकी इंटेंसिटी अपवर्ड है। मिड पॉइंट पे 0 है इंटेंसिटी और फिक्स एंड फ्री एंड पे W है। लोडिंग समझ में आया क्या? Yes, sir. लोडिंग ड्रॉ करना, फिर उसका BMD। Sir, AC loading. नहीं, फर्स्ट हाफ का डाउनवर्ड, अदर हाफ का अपवर्ड है। Sir, like this. ठीक है, अब इसका BMD बनाना है, बोथ SFD BMD। So they both having the same intensity. हाँ, UDL की इंटेंसिटी W है। Both are varying 0 to W, W to 0. अभी तक जो भी किया एक बार दिखाना आप। Sir, SFD sign. SFD. ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन से है कि आपने? This is standard. Shear force at the fixed end, कितनी वैल्यू होगी shear force की? W into L, because UVL uniformly varying loads is cancel हो जा रही है.
एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। ओनली यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड रहेगा डब्ल्यू वही लगेगा फिक्स एंड। मिड पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है आपका? मतलब आपने लेंथ, टोटल लेंथ एल लिया है कि आधा आधा एल लिया है? टोटल लेंथ है। मिड पॉइंट का शियर फोर्स कितना है? फिक्स्ड एंड पे शियर फोर्स, ये शियर फोर्स डायग्राम बनाया ना आपने, फिक्स्ड एंड पे शियर फोर्स की वैल्यू W कितनी आ रही है? क्यों? सर यूवीएल जो रहेगा उसकी मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होना चाहिए क्या अगर कैंसिल हो रहा है? तो साथ में यूडीएल भी है ना W। अच्छा, यूडीएल भी लग रहा है इसका। ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है, एसएफडी सही है, गुड। पीएमडी व्हाट में अबाउट थोड़ा पीएमडी? अच्छा, टेल अस वन थिंग, what is the purpose of drawing bending moment diagram? to know about where the maximum bending moment, the variation of bending moment across the length, Variation of bending moment. So and what are to you know going to the do with this variation? Let's say you know the variation of bending moment, whether it is varying linearly or parabolically or cubically. What are you going to do with this information? sir, we also try to find out the point of contraflexure where the bending moment sign changes. This point also show that the curvature of bending to changing from sagging to hugging. So, but in order to find out the location of point of contraflexure, you don't need the equation of bending moment, right? You don't need the sign of variation of bending moment. You can find it out in other ways. Let's say you need to find the point of contraflexure. There is a point of contraflexure and you need to find the location of it. What are you going to do? Sir, at that point, the curvature of beam changes from sagging to hugging or hugging to sagging. So there will be we provide we say that No, 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 no. You're not understanding my point. मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो एक बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? sir na sir for that we draw we need to draw bending moment diagram find out बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, उसके बाद we write down the equation of bending moment, equate the with 0 and find out from the equation and calculate the x the distance from the fixed. जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा। Yes sir. So you can't think of any example where at the point of contraflexure bending moment is not 0. Sir, the definition of point of contraflexure itself, where it is a point where the bending moment is 0. It's not the point where bending moment is 0, right? Do you understand the meaning of contraflexure? What is the meaning of contra? Changing. Contra means difference, right? So you have these settings in your TV also, brightness, contrast, right? So what is contrast? It's the difference between the black and white. If you increase contrast, what increases? The intensity of black and white. Difference of intensity in black and white, that increases, right? So contra means difference or opposite. And flexure means bending. So it's the point where the what changes?
where the sign of bending moment changes, where the curvature changes, where the nature of bending changes from sagging to hogging. But it is not the point where bending moment is always zero. For example, simply supported beam subjected to couple. Have you done it? Sir, at the midpoint. Wherever. Let's say midpoint. Let's say that the couple is M. What will be the reactions? Sir, reaction, bending moment reaction at both end and 0. What will be the reactions at the supports? Sir, 1 minute. Sir, M by L. Plus minus. Plus minus M by means they will be equal and opposite. Now draw the bending moment diagram. What are you going to get? Sir, triangle. Show me. What will it be? So according to your bending moment diagram, if I draw the nature of bending, the entire beam has to what? Has to be under sagging or hogging. Entire beam will bend in the same way. Imagine, let's say this is a beam. Okay, it's simply supported, and now I'm applying a couple here. So what is going to happen? It's going to bend something like this. This is what going to happen. Okay, the couple is going to bend it something like this. So half of the beam will be sagging and the other half will be hogging. Okay, from the left hand side you'll get a different sign of bending moment. From right hand side you will get a different sign of bending moment, right? And at the center, if there is a couple, the bending moment should change suddenly. Yes, sir. So there is nothing there in your bending moment diagram. There's no sudden change. Sorry, sir. Just 1 minute. It is going to be like this. There will be two triangles. The first half will be positive, the second half will be negative, right? Right. So draw it. I forgot. Draw it, draw it. It's a standard loading case. So like this. No. At the supports, is there any couple? So how the bending moment is changing suddenly there? At the supports, the bending moments will be 0. At the center, bending moment will be plus M and minus M. Like this. Yes, now you are correct. Now look at the point of contraflexure. Is the bending moment 0 there? No, sir. There are two values of bending moment there, plus M and minus M, right? But it's not 0. Now you are saying अगर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालना है तो हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बना के उसको 0 से इक्वेट कर देंगे. But what if at point of contraflexure bending moment is not 0? Then how will you find the point of contraflexure? ऐसी ही कोई सिचुएशन है, चलो मान लो यहाँ पर तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पर साइन चेंज कर रहा है. बट मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहां आपको नहीं पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो है उसका साइन जो है किस तरीके से किस पॉइंट पे एग्जैक्टली चेंज हो रहा है, और आपको ये नहीं पता वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे उस पॉइंट का लोकेशन? Sir, if the bending moment diagram
if like a triangle shape, then we from the geometry we can find out the. In this particular case, it's triangle, right? But it's not always, it will not always be triangle. Then what will you do? मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? कोई कर्व जो है अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिक्स में? स्लोप निकालना। स्लोप निकालने कैसे? चलिए, लेट्स से इसी बीम को प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंटली इसमें स्ट्रेस निकालना, ठीक है? थ्योरेटिकली तो आपको पता है स्ट्रेस कैसे निकलेगा, बट प्रैक्टिकली लेट्स से यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेसेस. हाउ विल यू डू इट? Sir, can you repeat? Let's say you have a beam, okay? Theoretically, you know how to calculate the stresses in a beam. You know the equation of bending stress, you know the equation of shear stress, right? Practically, let's say you need to find out the stresses experimentally, not theoretically, experimentally. So how are you going to do it? The beam is subjected to only transverse loads. There are no axial loads, there are no other type of loads, there are only transverse loads, and you need to find out the stresses in the beam. So how are you going to proceed? By calculating the deflection of beam. You need stresses. Why are you calculating the deflection? From the stresses in beams. First of all, tell me which equipment are you going to use to find out the stresses? strain rosette. Strain rosette. What is strain rosette? Strain rosettes are the instrument, deflection measuring instrument. From that we can measure the deflection. How does it measure the stress? And from the strain deflection, we can found out the strain. From that, by using the Hooke's law, we can find the stress. What is the difference between strain gauge and strain rosette? Yes, sir. When there three strain gauges are connected, and then we call this arrangement as a strain. So you are saying if you want to find the stresses in this beam, which is subjected to only transverse loads, you need 3 strain gauges. You can't do it with less number of strain gauges. Yes, sir. We can do it by using only one strain gauge. Because the beam using only one strain gauge, how you are going to use that strain gauge? Where are you going to place it? Sir, we know that the stresses are produced when you place maximum and the outer fiber of. So we can place the outer layer. Outer layer. So if this is the beam, you are saying that at every point on this outer surface, the stress will be same? No, sir. Only top and bottom.
top and bottom. So not outer layer, at the top and bottom. Okay. So what are you going to do? You are going to place a strain gauge at either top or bottom. Okay. And how are you going to place it? Are you going to place it along the length of the beam or perpendicular to the length of the beam? Along the length of. Okay. So what is it going to calculate? Deflection. Deflection. Of beam. Deformation of beam along the length. Deflection or deformation? Which deformation? So longitudinal. Longitudinal strain. It is going to give you longitudinal strain. Then by applying Hooke's law, you will convert it into longitudinal stress, bending stress. Okay. What if the stresses are not within proportional limit? Then what you are going to do? If the stresses are not within proportional limit, tell me if this method is going to give you the correct answer. Will it matter if the stresses are within proportional limit or not? Will it matter? Yes, sir, it will matter because, sir, if beam within elastic limits, there is no plastic deformation of beam. So we want the stresses are within elastic limits so that it can't deform permanently. सर कोई और क्वेश्चन आपका? नो. ध्यानराज, आपका इंटरव्यू कब है? सर 30th में. 30th में, 13th में? 30 मई. 1 महीना है आपके पास ना अभी? ओके. देखो, आपसे जब हमने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे तो पहला नाम आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का लिया था, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े से हिले हुए है ना. जैसे आपको जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का कॉन्सेप्ट जो मैं पूछ रहा था, आप उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे. सिंपली सपोर्टेड बीम विद कपल, वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो बहुत ही मतलब वो वाला तो हम लोग क्लास में एग्जांपल के तौर पे भी करते हैं, है ना. सर वहाँ पे मैं मतलब थोड़ा नर्वस हो गया. देखो, एक्चुअल इंटरव्यू में भी यही होगा कि आप स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, फिर जहां आपसे एक दो गलतियां होंगी ना तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा और फिर मतलब जो बनते हुए सवाल भी रहेंगे तो हो सकता है उसमें भी आप अटक जाओ. ठीक है. तो उसके लिए अपने पास एक ही रास्ता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ लें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहे. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आप पहला नाम ले रहे हो जिस भी सब्जेक्ट का, एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का अगर आप नाम लोगे तो वहां से सवाल आना तय है, लगभग तय है. ठीक है. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लो. ओके. थ्योरी बुक से पढ़ लो. एक अच्छी किताब है जेम्स गियर करके, आपने सुनी है? तो जेम्स गियर से आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना. जहां आपको लग रहा है वीक एरिया है, मतलब कोई आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो उसको आप करने दो, लेकिन जो वीक है वहां उसको आप जेम्स गियर से कवर कर लें. आप कौन से बैच से हैं वैसे? सर अभी मैंने विजय बैच लिया है. थैंक यू. अच्छा, विजय बैच से. तो अभी आपने ज्वाइन किया है, इससे पहले लास्ट ईयर भी किया था? लास्ट ईयर में टेस्ट सीरीज लिया था. ओके. और 5 डिविजन बैंक किया. ओके. ठीक है. तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि आप जो वीक आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप वापस से बुक से अच्छे से पढ़ लो, थ्योरी है ना. बाकी थर्मोडायनेमिक्स का तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा ही है. रामानंद सर? हाँ सर मेरे को एक दो चीज अच्छी लगी, जैसे कॉन्सेप्ट इसका ठीक है और दूसरा कुछ हिंट दे रहे हैं तो वो जवाब दे पा रहा है. बस वही है कि जो आप 4 सब्जेक्ट बोलने वाले हो ना, खासकर उसका सीक्वेंस आप उसी सीक्वेंस में बताना जिस सीक्वेंस में आपका वो स्ट्रांग है. जैसे आपको लगता है कि आपका सबसे स्ट्रांग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तभी उसको पहला बोलना. और दूसरा चीज, एक तो अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है, वो आपका पार्ट ठीक है मेरे को लग रहा है, खासकर थर्मोडायनेमिक्स का अगर बात करें. और दूसरा ना, हर एक सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड अच्छी बुक है, लाइक जैसे सर ने बताया कि स्ट्रेंथ मटेरियल के आप जेम्स गियर पढ़ो.
वैसे आप थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी जो भी एक स्टैंडर्ड बुक अच्छी है, जैसे एक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि 𝐂𝐚𝐭𝐬𝐿 की बुक आती है, वो आपको थर्मल वाले सारे ही पार्ट में स्ट्रॉन्ग कर देगा। जैसे हीट ट्रांसफर के लिए भी उसको रिफर कर सकते हो। तो एक एक बार वो सब्जेक्ट जरूर पढ़ लो, मतलब बुक से भी। तो जहाँ छोटी मोटी चीजें हम लोग गेट की तैयारी या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के दौरान छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं, वो उससे कवर हो जाएगा। क्योंकि बेसिक और बेसिक क्वेश्चंस बार्क में जो पूछे जाएंगे उसमें स्टैंडर्ड बुक से काफी ज्यादा वो इंस्पायर रहते हैं। क्योंकि हम लोग एक्चुअल में एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक्चुअल तो तरीका वही है ना कि उनके हिसाब से कि आप बुक से पढ़ रहे होगे, तो बुक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दूसरा चीज, आप एक हम लोग के क्वेश्चन पूछने के तरीके में देखोगे कि हम लोग एक ही क्वेश्चन में कुछ कुछ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं ग्राफ था तो उसी में आपको कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन देके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठा के आपको उस क्वेश्चन को लंबा खींच रहा हूँ। तो बार्क में भी यही होगा, आपको ऐसा नहीं करा जाएगा कि एक सिंपली लोड देके आपका उससे एसएफडी बीएमडी पूछ लिया है, या सिंपल एक पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम बनवा लिए। एक अगर वो क्वेश्चन को पकड़ते हैं, वो आपका किस्मत है कि क्या क्वेश्चन पहली बार आता है, तो वो क्वेश्चन कम से कम आपको 30 से 40 मिनट जाने वाला है। तो उससे जितने भी चीजें बन सकती हैं, जितने भी सारे चीजें हो सकती हैं, वो सारा कवर करना। लाइक जैसे पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम बना रहे हो, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एन के लिए पता होना चाहिए कि कैसे वो बनेगा। तो आप तैयारी करो, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक है। साथ में वहाँ जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको हिंट उन लोग भी देंगे, उस हिंट को ध्यान से समझो और उसको अप्लाई करके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का जवाब सही देना है, उनको समझ में आ जाएगा आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। बट आपको वहाँ एक्टिव होना है, वो जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो पक्का आपको सेलेक्ट करेंगे सर। एक ना ग्राफ प्लॉटिंग भी थोड़ा सा पढ़ लेना, मैथमेटिक्स का ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि उनके जो ज्यादातर सवाल होते हैं ना वो ग्राफ्स के ऊपर ही होते हैं। तो अलग अलग फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, है ना, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ये वो, तो थोड़ा सा मतलब इसको भी ब्रश अप कर लेना। क्योंकि मोस्टली मतलब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करो, थर्मोडायनेमिक्स, एफएम, कोई भी सवाल वो पूछेंगे ना उसमें ग्राफ कहीं ना कहीं से घुस ही जाएगा। ठीक है, तो अपन उसी में फंस, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो पता होता है, लेकिन हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को कभी ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा नहीं होता। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, है ना, तो वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं कि अगर वो पूछ देंगे कि अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्लोप कैसा जाएगा, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वहीं हम लोग फंस जाते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा बेसिक्स भी पढ़ लेना मैथ्स से। ओके, ये सर यानी वो टॉपिक भी है सर मेरा ग्राफ प्लॉटिंग ग्राफ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे मैंने, उसमें वो मोस्टली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, बाकी तो आप कॉन्फिडेंट रहो, है ना। और आपको आगे और भी कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो रामानंद सर का भी ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप कभी भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ज्ञानराज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। बाय बाय, Bye टेक bye. केयर।